कैसे नालायक बैठे हैं आपके। Well, there is a saying that good things take time, and I am an absolute believer of that. Well, my name is Nishkar Sinha, and if you're new to the channel, then make sure that you subscribe to it. And if you're already subscribed to it, then make sure that you like this video. Now, with that said, ये जो वीडियो है आज का, it is about my bike. The bike that I took recently, it's Royal Enfield Hunter 350. Now, this is not a review of the bike. This is not about if you should buy this bike, if you're looking to buy a bike, what should you go, what should you look for. This is nothing about that. Now this video is purely about my experience. This video is purely about a heart-to-heart talk that I wanted to do with you guys. And this video is about a story of a boy who really likes bike. There are a lot of people जिनको बाइक्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, and I'm really happy to say and admit it that I am one of them. I'm amongst that crowd जिनको बाइक्स का काफ़ी क्रेज़ है. Now before we start, before I talk about my new bike, there is something that I want you guys to understand. मेरे पास एक बाइक थी before I owned this bike. I had a bike. It was Yamaha FZ. It was a 2012 model and it was second hand. But that bike has been really good to me. मैंने वो बाइक के साथ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है. Well, not major big travelings, but like I have been to Nashik on that bike. Lonavala, so I don't even remember how many times I've been there. उसके अलावा I've been to Mathेरान a couple of times and Karjat. Basically local में I have traveled a lot on that bike. मेरा कमांड उस बाइक पे काफ़ी अच्छा था, but then again that bike was of the year 2012. So it was time to change, it was time to look for something new. And after I got my job, after I started with the series and things, like how life started upgrading, I wanted to upgrade myself in terms of something that I absolutely love, and that is bikes. Now let's trek back to the time. Let's start the story of Hunter 350. The Royal Enfield has been a company which has existed in the market from a really long time. The Royal Enfield promises you bike that can sustain in any kind of terrain. कोई भी weather हो, कोई भी जगह हो, Royal Enfield is one bike that can just go through it. तुमको मनाली घूमने जाना हो, तुमको हिमालय पे जाना हो, कहीं भी जाना हो, Royal Enfield has something to offer, something that is just gonna perform and something that's gonna be phenomenal. But then again, because it was not possible for me to go to Manali, just मुंह उठा के मैं नहीं जा सकता था, and I was looking for a bike जो काफ़ी ज़्यादा which suits my personality as well. So then I started digging, then I started looking for bikes. तो सबसे पहले मेरी नज़र गई थी ESD Scrambler पर. This is a really good bike, but then again I didn't really like it. Well, when it comes to Royal Enfield, there are a lot of bikes. जैसे कि तुम्हारी classic 350. But I don't really like that bike. Then there is Himalayan. Yeah, I like that bike, but it doesn't solve the purpose for me. Then there is Himalayan Scram 411. Now that is a fantastic bike, but and finally there is the Interceptor and the Continental GT 650. But you get the point. I don't really like it. Actually, I like the Interceptor 650, but I don't really like it. And then on 7th of August 2022, Royal Enfield came with this beautiful machine that I fell in love with. So now here I'm gonna show you the clip where I went for the test drive of the bike. मैंने जिस दिन test drive करी, उसी दिन after getting the test drive, I gave the booking amount. So here's a clip from that. See it, and then I will continue. अभी I have the key to the Royal Enfield Hunter 350. ये test drive है. So I'm gonna go. I'm gonna see कैसा है. तू भी आजा, बैठ जा. पीछे बैठू? हाँ, बैठ जा. बारिश आ गई. हाँ, तू ही जा गया, मेरे को भीगना नहीं है. चला के देख, तेरे कोई चला नहीं है. मैं रुका इधर ही.
आराम से आराम से। थैंक यू। But the story isn't that simple. So देखो हुआ क्या, I saw the bike, I gave the booking amount and I was planning to get the Rebel Red, the one that I actually have. फिर उसके बाद में I just had this conversation with Kasturi, you all know who Kasturi is, and then she kind of convinced me कि you know the Rebel Blue looks really good. So I went again and I asked them to change the color from Rebel Red to Rebel Blue. Now here is a clip which I'm showing you, which is from another video that I'm gonna post soon, जहाँ पे I'm talking about that I was actually planning to buy the bike on 16th of November, but then here's what happened. It's gonna be a small clip, not a major clip. वो बस थोड़ा सा तुम देखो and then वो video बाद का है, but then I just want you guys to know the reason. And previously I was planning कि मैं ये बाइक नवंबर में लूँगा on my birthday. बट देन उसके बाद शिवम ने एक ऐसी लाइफ टिप दी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, विच वॉज कि अगर तू बर्थडे के दिन बाइक लेगा तो फिर चलाएगा कब। तो मैंने सोचा यार बात तो सही है, तो बर्थडे तक का वेट ना करके चल के बाइक ले ली जाए। Now getting back to the story, मैंने वहाँ पे बाइक बुक करी एंड देन उसके बाद में they called me up, they said that you know they have a bike in stock if I am ready to take the delivery, and I said no, I want to wait for the rain to go और उसके बाद मैं बाइक लूँगा. So I waited and then I again changed the color. जब मैं मेरे डैड के साथ एक बार गया, जिस दिन शिवम को डाउन पेमेंट शिवम को बुकिंग अमाउंट देना था उसके बाइक का, that day we went and my dad saw the rebel red color and he was like, you know, this looks really nice and the blue one doesn't really look good, and I was anyhow so much considerate about the Rebel Red, the one that I have. तो मैंने कहा ठीक है, like fuck it, let's change it. I like the Rebel Red, I'm gonna take that. फिर उसके बाद में वो चेंज किया. उसके बाद में again the Royal Enfield people called me. They said that you know we have a bike in stock if you want, and I said no because it was raining like fuck. Anyway, fast forward to the time when I finally decided कि चलो ठीक है, fuck it, बारिश खत्म होने वाली है, गणपति जाएंगे. गणपति जब जाते हैं उसके साथ में बारिश चली जाती है मुंबई में usually, and I was like let's take the bike, let's go make the down payment and get it. तो मैं और भाई गए, हमने जाके डाउन पेमेंट वगैरह का जो भी बात था वो किया एंड देन उसके बाद में इट वॉज द टाइम टू वेट. नाउ हियर्स वेयर द थिंग्स गेट सैड, क्योंकि जब मुझे बाइक लेने के लिए माई माइंड सेट वॉज कि यू नो आई एम गोना वेट फॉर सम टाइम एंड उसके बाद मैं बाइक लूँगा, तब बाइक अवेलेबल थी. एंड देन व्हेन आई वाज फाइनली रेडी टू गेट दैट फ्रीकिंग बाइक, तब बाइक अवेलेबल ही नहीं हो रही थी. दे वर लाइक अभी स्टॉक में नहीं है, द रिबिलिटी इज नॉट कमिंग हियर, फलाना ढिमकाना व्हाटएवर इट वाज, बाइक मुझे नहीं मिल रही थी. एंड आई वाज इन अ स्टेट वेयर लाइक भाई बस मुझे अब जल्दी से बाइक मिल जाए. वेल एनीवे, फास्ट फॉरवर्ड टू द डे व्हेन वी गॉट द बाइक. नाउ हियर इज द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी. मोनित को ये सब के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि मैं बुकिंग अमाउंट वगैरह दे के आ चुका हूँ, वो भी मैंने उसको बाद में बताया. एंड देन जब टाइम था डाउन पेमेंट करने का, वो टाइम तक मोनित को ये नहीं पता था. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि मैंने बुकिंग अमाउंट किया, मोनित हैड नो आइडिया. हमने उसके बाद मोनित को बताया. हमने डाउन पेमेंट किया, मोनित हैड नो आइडिया, हमने उसको उसके बाद भी नहीं बताया. Now the day when we decided to get the delivery, it was the same day when I was invited for Creators Day. So Creators Day में मैं वहाँ था और मुझे Royal Enfield से कॉल आता है कि सर योर बाइक इज़ रेडी फॉर डिलीवरी, अगर आप आज जा सकते हैं then you can collect it. अब मेरा मन ऐसा था, क्रिएटर्स डे दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड माई बाइक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मैं क्या करूँ. सो देन आई अटेंडेड द इवेंट, आई कॉल्ड अप रॉयल एनफील्ड का शोरूम, आई आस्क्ड देम व्हाट्स द, आई मीन लाइक हाउ लेट कैन यू गिव मी द डिलीवरी. दे सेड सर वी कैन गिव यू द डिलीवरी बाय से 7:30 समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट माय ब्रदर सेड वाज कि भाई अगर देख, अगर तू आज डिलीवरी ले लेता है देन संडे वी कैन गो समवेयर ऑन द बाइक. एंड आई वाज काइंड ऑफ कन्विंस्ड विद दैट. तो फिर फ्राइडे को आफ्टर द क्रिएटर्स डे आई क्विकली केम बैक. I went to the Royal Enfield ka showroom, I took my bike and then we came home. Now here's another funny story inside the story, and that is जिस दिन हम बाइक की डिलीवरी लेने के लिए गए उस दिन मैंने मोनित को ये बताया कि भाई चल आज चलते हैं डाउन पेमेंट करने के लिए. एंड देन मोनित वाज लाइक ठीक है भाई चलो.
वहाँ आने के बाद मोनित को पता चला कि हम आज डिलीवरी लेने आए, हम डाउन पेमेंट करने नहीं आए। सो दिस इज़ हिज रिएक्शन। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, है ना, डीपी नहीं करेंगे, लेके जा रहे हैं डीपी हम लोग बहुत पहले करते हैं, अभी बाइक लेके जाएंगे, अभी डिलीवरी लेने आए हैं। कैसे नालायक बेटे आपके, अपने बेस्ट फ्रेंड से सारी बातें छुपाते हैं ये तो। Yeah, I know, it's funny, right? I know. But anyway, मोनित भाई देखो यार, मोनित बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास दोस्त है मेरा और मेरे भाई दोनों का। आई नो हिम फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई हैड टू टेक हिम। अगर मैं उसको लेके नहीं जाता ना डिलीवरी के टाइम पे तो वो मेरी जान ले लेता। बट एनीवे, तो हमने फिर बाइक ली, बाइक लेके निकले। नाउ हियर आर सम क्लिप्स दैट इज फ्रॉम द शोरूम व्हेन आई टुक द बाइक। they're gonna be little blurred or I don't know because वहाँ पे लाइट नहीं थी, हमने डिलीवरी शाम के टाइम पे ली। there is a reason why I wanted to take the bike in the morning or in the afternoon summer time so that लाइट होती and I could have shot more good videos with that, but unfortunately जो है वो है। So here's clip from me and my brother, we taking that bike, we just kind of doing all the last moment things before we get the bike out of the showroom. So here's that. And then finally, I can say that I own a Royal Enfield Hunter 350. And as I said in the beginning of this video that good things take time. So if you plan to do something, put efforts into it, take your time. That thing will also take time to be completed or to be implemented in your life or reflect in your life. So with that said, let's end today's video. Thank you so much for watching. If you like this video, then make sure that you subscribe to my channel. और अब तुम यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो का जो लाइक का बटन है वो भी दबा दो। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, just to give them one ounce of motivation or 1 ounce of just happiness कि भाई मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। So with that said, I'll see you guys tomorrow. Till then, take care. Bye bye.